Hello students, the question is what is the current through the battery in the circuit shown below? And the given options are option 1 1 ampere, option 2 1.5 ampere, option 3 0.5 ampere and option 4 0.25 ampere. So the problem is based on the topic electric circuits and in particular the diode based circuit. So in this particular problem there is a circuit here. It is energized by a 5-volt battery. There are two parallel paths. First parallel path consists of a diode in series with resistor and second one is also having a diode in series with resistor. Now to solve this particular problem, we have to assume the diode to be ideal, because without the nature of the diode, without knowing the nature of the diode, we cannot solve this problem. So we have to assume it to be an ideal diode, then we can solve this particular problem. Now you can see easily that the positive terminal of the battery goes to the anode side of each diode. The positive potential is going, what is positive potential of the battery is going to the anode side of the diode. It means that both the diodes are forward bias. And we know that when we apply a forward bias to a diode, it is a short circuit. Short circuit means it is replaced by a wire having a zero resistance. So it is replaced by a wire. All the current will flow through this particular diode and the resistance of the diode is assumed to be zero. So the simplified circuit in this situation looks something like this. In place of diode, there is a wire and then there are resistors. This is 20 ohm resistor in the upward branch, the top branch, and the lower branch is also having the 20 ohm resistor. And there is a wire in place of the diode because it is forward bias. And the situation is like this. The simplified or equivalent circuit in this condition is like this. 5-volt battery in parallel with two 20 ohm resistors. And we have to find out the current through the battery, current passing through the battery, or in this case we have to find out the total current. So first of all we have to find out the equivalent of these two resistors. So to find out the equivalent, R equivalent formula, we know that it is R1 R2 upon R1 plus R2. We have to use this formula, R1 R2 upon R1 plus R2. Both the resistors are same. It means that the equivalent is half of this value. It means that the equivalent is 10 ohms. So we can replace this two 20 ohm parallel resistors combination by a single 10 ohm resistor like this. So this is the simplified circuit in this situation, and we have to find out the current here, I here. So the current I flowing through the diode is I equals to total voltage, which is 5 volts upon the total resistance, which is 10 ohms. So this comes out to be 0.5 amperes. So 0.5 ampere is the third choice. Third option is correct here. सो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है कि बैटरी के थ्रू पास होने वाली करंट कितनी होगी। बैटरी के थ्रू मतलब बैटरी जो करंट दे रही है, सप्लाई कर रही है, वो करंट हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, क्योंकि जितनी करंट वो सप्लाई करेगी उतनी ही करंट जो है उसके थ्रू भी जाएगी। यहाँ पे एक जो सर्किट दिया गया है उस सर्किट में दो डायोड दिखाए गए हैं और हर एक डायोड के सीरीज में एक 20 ओम का रेजिस्टर लगाया गया है और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पे इन डायोड को हम आइडियल अज्यूम करके करते हुए चलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायोड के बारे में कुछ दिया नहीं गया है कि वो किस टाइप का डायोड है, तो सीधे सीधे उसको हम आइडियल मानते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइडियल डायोड के लिए हम जानते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो एक सिंगल वायर से जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है उससे रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर रिवर्स बायस होती है तो वो ओपन सर्किट या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या जिसे हम कहें ब्रोकन वायर की तरह से शो किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही डायोड्स के एनोड साइड हम साफ-साफ देख रहे हैं कि कनेक्ट हो रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका मतलब दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। तो दोनों ही डायोड्स जो है रिप्लेस किए जाएँगे बाय अ वायर, वायर से रिप्लेस किए जाएँगे। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि दो 20 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाएँगे। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकाल लेंगे, वो बहुत ईज़ी है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 10 ओम्स। उसके बाद जो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट बचता है वो बचता है एक 5 वोल्ट की बैटरी इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टर। यहाँ पे सिंपल हम जो है करंट निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज अप्लाइड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 5 अपॉन 10 जो वैल्यू निकल के आती है 0.5 एम्पियर। सो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा चॉइस या ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।